elections in Myanmar, we should be able to engage each other more effectively now. As regards the HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, the Army operated across 2 neighboring countries and 10 states. It rescued over 30,000 people, and during the Punjab floods in Pathankot, some of you would recollect the daring rescue of the CRPF personnel by an Army aviation helicopter from a collapsing building. In the border states, where I have delegated full authority to my div commanders, the Army was able to act even before formal requests were received from states. This reaffirms our role as the natural first responder during HADR crisis. Here, I must mention 14 Rajrif, Dharali, Uttarakhand, which lost 1 JSU 9 other ranks, continued to focus on the complete rescue operation and coordination at the initial stages. And that's what is the military motivation all about. Our 17 HADR bricks which we have planned are gradually taking shape pan-India. Now, the battle of the future will not be won by a single arm or even a single service. It will be a national level enterprise. The Honorable Prime Minister captured this vision through the mantra of Jai, where jointness integrates our effort, Atmanirbharta empowers our capability, and accelerated innovation drives ideas into action. So based on the lessons drawn during Op Sindoor and in line with the Indian Army's belief that change must come at the velocity of relevance, we prefix the verb acceleration to all our nouns, that is, initiatives. We followed what Subhash Chandra Bose once said, no real change in history has ever been achieved by discussions alone. It was a call for action, and I am happy to say that with guidance from the highest level, full trust of our Honorable Raksha Mantri, and encouragement from all stakeholders, the Indian Army has made significant strides. I shall now touch upon some important tangible updates on the 5 pillars of decade of transformation. Herein I must mention that the urgency for change has been catalyzed by the middle level officers of Indian Army and not by top down for a change. So the first pillar, that is the force restructuring, focuses on reviewing organizational structures to enhance multi-domain combat potency and utilize tail as teeth sharpener. This is a different term, tail as a teeth sharpener. Therefore, we have adopted a spiral development approach centered on organization as well as equipment. We have reoriented and created several structures. Rudra Brigade for high-tempo multi-domain operations, Bearer battalions, that is the light commando battalions for agility and disruptive effect. Similarly, Shaktivan regiments and Divyastra batteries for artillery will use US and counter-US for extended reach and real-time targeting. Ashni platoons of infantry platoons and some other organizations which are on the design board as of now will enhance precision, surveillance and strike options at the tactical as well as operational level. All of this will enhance our cumulative combat effectiveness. A large number of government sanctioned letters for organizational change have been approved over the past 14 to 15 months, numbering approximately 31, including that of the path-breaking IBGization of a corps and raising of an aviation brigades. The TA recruitment also, as you are aware, physically commenced after a gap of 5 years in year 2025. Moving on to pillar number 2, modernization and technological infusion remains a continuous and dynamic endeavor. Our modernization priorities focus on improving mobility and protection, strengthening network-enabled operations, enhancing communication system, deploying terrain-specific EW system, inducting new generation munitions, and expanding US and counter-US capabilities. Our immediate focus is on innovative kitting of legacy equipment or the platforms. The next phase involves developing new systems and finally culminating in network-enabled multi-domain operations. Advanced EW system, BrahMos, extended range, Pinaka, ELGR system, Pralay missiles, QRSAM with extended range, Lotte munitions, drones, UCAVs are some game-changing equipment in the pipeline. As for the emergency procurement 1 to 6, a concern, they have sharply reduced acquisition timelines and created opportunities for Indian industries.
the funding has increased substantially, especially for EP6. For the first time, even the corps commanders have been empowered with emergency procurement powers. The modernization of logistics has included induction of logistic drones and robotic mules in large numbers. Now, this induction is not enough. This time in the central sector itself, approximately 10 tons have been ferried by these logistic drones. Our army-based workshop, which played a key role during Operation Sindoor, have been reoriented from being repair facilities to research and development come production-oriented hubs. Atmanirbharta in ammunition, we are proud to say that 159 out of 175 ammunition categories Indian Army holds have been fully indigenized, that is over 90%. Technology infusion. As my predecessor, General Manoj Pandey, had emphasized, technology infusion is central to addressing future security challenges. And based on that, the year of 24 and 25 were also declared as the year of technology absorption. We have aligned ourselves with all major national technology missions, including 6G and the National Quantum Mission. A dedicated quantum lab has been established in MCT Mau. In August 25, we launched the Agni Shodh initiative with IIT Madras to harmonize research and development pathways tailored to our operational needs. AI incubation cell is working well at Bangalore in Bell premises. We have introduced India's first sovereign agentic AI in box, a major step towards national vision of self-reliant, battlefield-ready AI. In November 25, under the MOD initiative of Aditi, Raksha Mantri ji launched Indian Army's next generation unified AI platform, Ekam AI, as a secure mission-grade AI as a service ecosystem. We will now upgrade fine-tuned LLM to sovereign LLM for the same. That will remove all the biases which generally creep into the system. It will help us in effective integration of the battlefield surveillance system, ACCCS Shakti, as well as CIDSS. The secure Sambhav mobile phone has proven highly effective, including during Ops Sindoor, and phase 2 will enhance features is already underway. Now, continuing our drive towards a technology-enabled army, 2026 and 27 have been declared as the years of networking and data centricity. I say again, years of networking and data centricity. We understand that is in this age of acceleration, only one focus may not be adequate for the year. So all my PSOs will concurrently focus on one activity related to their domain of expertise. For example, year of habitat and military nutrition, year of innovation, touching lives, and of course, modern infra introduction. Moving ahead to the third pillar, that is system, process, and functions. We continue to refine organizational mechanisms to adopt best practices, improve efficiency, enhance outcomes, and gradually reorient manpower. Our warfighting doctrines are being updated to fine-tune multi-domain operations. Basically, the ability to fully succeed in all four quadrants. As you understand, all four quadrants of warfare include from non-contact, non-kinetic to contact kinetic. We have refined our tactics, techniques, and procedures across all domains to operate effectively in the broadened battle space, which includes air littorals, cyber, cognitive, EM spectrum, and space. As highlighted last year, we initiated the study on delayering of headquarters to achieve faster decision making. This study is nearly finalized, and near simultaneously, its implementation is also commenced. Last 2-year efforts on technology absorption has proved way for accelerated automation, thus introducing automated delegated decision making and facilitate the skip echelon mechanism. Under the Honorable Raksha Mantri's year of reforms, the DPM has already been revised and the DAP and PDS are advanced stage of revision. As for the fourth pillar is concerned, that is human resource, it remains the Indian Army's greatest strength, and our vision is of human amplification where technology enhances the soldier. Mind you, I keep saying that we must ride on the technology and not allow the otherwise.
The welfare and empowerment of our personnel, veterans, Veer Naris and their families remain central to our ethos. Regarding women officers and women soldiers, feedback on performance has been quite encouraging. We are expanding progressively, and as I had mentioned last year, we are now test bedding limited entries into the Territorial Army Home and Hearth with 36 vacancies. We have also opened up medical non-tech as well as Army Education Corps for the same. As announced last year, all women skydiving display team at Batinda was created, and now it has 12 members and they have completed approximately 520 jumps. To strengthen fiscal standards as a team all across the ranks and ensure fit mission-ready units, CPT 26 has been promulgated as a common physical proficiency benchmark from soldier up to the Chief of Army Staff. For the welfare of our veterans, Project Naman was launched in August 2024 with 14 centers. It's a single window for all requirements which a veteran may have. It has from 50 it has expanded to 100, and the 100th one will be inaugurated while at Jaipur by the Raksha Mantri ji during the occasion of the Army Day Parade. It's a great example of whole of nation approach, partnership with Sparsh, Maiti and private banks, HDFC Bank, Axis Bank. I would also like to thank the 9 banks who have supported our initiative of providing rupees 1 crore accident insurance to our soldiers and veterans, of course, with various preconditions. As regards veterans, all army commanders have personally reached out to all the governors and the chief ministers of various states for the convergence on veterans' welfare and their role in nation building. Veteran Achiever Awards has got a traction where we are already going to achieve 150 at the time of Army Day Parade. As for the jointness integration is concerned, the 5th pillar, Operation Sindhu was a powerful demonstration of coordinated joint service planning and execution. The mandate for jointness and integration has been clearly defined at the highest level. As you are aware, we are progressing towards integrated structures in form of theatre commands. This is a deliberate, consultative and well-synchronized process to which the Indian Army is fully committed from day one. Now, to expand the arc of jointness, multi-domain synchronization, accordingly, the Army has expanded its arc of jointness to deepen cooperation with CAPFs and multiple ministries. Communication support has been extended to forward CAPF units, about 40 BSF and ITBP units, integrated into the Army's Network for Spectrum, that is NFS. We are examining common chains for ammunition, health, services and supply systems. As for effective multi-domain operations execution, deeper civil-military industry collaboration will be essential. We have conducted convergence capsule at 28 locations along the border states, especially 8 border states where over 700 attendees from the civil side have been there. Even the Higher Command course, which is a classified course, has been opened up for 2 weeks this year for 40 participants from the policy, academia as well as the industry. Now, in capability building development, the academia industry military troika remains central. The Army has shed traditional inhibitions and continues to reach out sharing concepts, sending officers on deputation and opening ranges and testing facilities to the industry. We do encourage veterans to act as a bridge between services and industry as well as academia. We are supporting the funding startups and have started the Army internship program across 8 verticals. We are happy to note that over 50,000 applications were received for 50 vacancies for the period of Jan to June 2026. And aligned with India's foreign policy vision of Vishwabandhu and Vishwamitra, the Indian Army has firmly established itself as a proactive instrument of military diplomacy. We remain a leading contributor to UN peacekeeping with over 4,000 personnel, including more than 100 women peacekeepers deployed across 9 out of 13 missions. Our recent engagements include 3 high-impact president-setting events. The first ever conference on women peacekeepers, Women in Peacekeeping, a Global South Perspective. This was a conclave of Global South held in Feb 2025. The United Nations Women Military Officers Course and Military Medicon with 42 officers from 15 countries in August.
and the first ever United Nations Troop Contributing Countries Chiefs Conclave, which brought together senior military leadership from 32 troop contributing nations. Now, these initiatives reinforce India's trusted role in global peace and stability. Recently launched Friends for Life website is now getting major traction. It is to connect all friendly foreign countries officers attending courses in India for lifetime connectivity. As regards nation building, our efforts are aligned to four broad lines of effort: border area development, catalyzing economic growth, self-reliance, HADR, and ecological conservation and sustainability. These initiatives leverage the Army's outreach, presence, and organizational strength to advance national priorities. Now, guided by the philosophy of Prakriti Sang Sena, Suraksha Bhi, Sarakshan Bhi, the Army has undertaken major ecological and sustainability initiatives. Our 10 ecological task force battalions have planted 10 crore saplings for better coordination. In October 2025, Ministry of Environment and Forest has nominated Major General rank officers as wildlife wardens in each of these states. We are very closely involved in two conservation efforts, the Great Indian Bustard and the Snow Leopard. As regards sports, 88 international and 457 national medals have been won by Indian Army, which include the 18 boys and 2 girls sports company raised by Indian Army. So overall, as we concluded 2025, I feel that in 2026 we will be able to steadily progress towards a different Indian Army, capable of thinking smart, seeing all, striking deep, moving fast, connecting domains, controlling or coordinating information, standing resilient, and most importantly, winning together with support from each of our countrymen. मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सक्षम, सजग और संकल्पबद्ध है, जो हर चुनौती का सामना पूर्ण तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए सदैव तत्पर है. राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. थैंक यू एंड जय हिंद. नाउ मैं ओपन टू क्वेश्चंस प्लीज. We will now commence the question and answer session. In order to give the maximum opportunities, as I explained earlier, we will be taking on 3 questions at one time, and I request whomsoever I nominate to please give out their name and the organization that they belong to, and then ask a brief and topical question. All right, as we have always been doing, we will start with the agencies. Okay. We have 3. What else is there? Yeah, 4. Yeah, 130. Sir, Namaste. I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, you talked about, in your opening remarks, you talked about busting Pakistan's nuclear rhetoric, sir, during Operation Sindoor. Can you tell us how did the army do it, or how did the forces do it? And during the talks with DGMOs during the conflict, was there ever any nuclear threat given by Pakistan Army? And sir, in recent past, we have seen that a major force restructuring has taken place, where you have been able to create a pool of over 1 lakh drone operatives. Was this necessitated by the Operation Sindoor, or was it in plans earlier also? And if you can tell us about the entire restructuring plan, sir, IBGs, Rudras, whatever the army is going to do in future. Thank you, sir. हेलो सर, कृष्ण मोहन मिश्रा, स्पुतनिक इंडिया से. सर, ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल हुआ, कितनी ज़रूरत समझी गई, और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या उसमें आगे बढ़ी है उसकी तैयारी में, और क्या भविष्य की तैयारी है, क्या भविष्य के कार्यक्रम है?
सर संदीप आईएनएस से सर मेरा सवाल ये है कि जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए थे और उन्होंने ये भी बात हुई थी कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उनको भी कम किया जाएगा, अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है? और कुछ खबरें ये भी हैं कि जो टेररिस्ट कैंप या जो ख़त्म किए गए थे वो दोबारा से जो है उन्होंने रिबिल्ड करना शुरू किया है, इसके बारे में क्या जानकारी सर? एक बार पहला पोर्शन दोबारा बताएंगे क्वेश्चन। सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस वक्त डीजीएम लेवल की टॉक्स हुई थी उसमें ये भी बात कही गई थी कि जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो मूवमेंट किया गया था, फॉरवर्ड मूवमेंट था, वो ग्रेजुअली कम किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो फॉरवर्ड मूवमेंट था उसको कम किया है, जो डिप्लॉयमेंट है उसको कम किया? क्या चेंजेस आप एलओसी के आसपास देख रहे हैं सर, या आईबी के आसपास? सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि सर जो टेररिस्ट कैंप आप लोगों ने जो बस्ट किए थे, निशाना बनाया था, उसके बाद से अब धीरे धीरे टेररिस्ट कैंप और ज़्यादा जो है वो जगह भी बदल रहे हैं और नए नए स्टैब्लिशमेंट भी हो रहा है, इसकी क्या जानकारी है सर? तो पहला मैं आपसे ही जवाब शुरू करता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीअश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए, और वो रीअश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहाँ तक हमारे आइज़ एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूँकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज़ एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है, इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है, तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए ज़रूरी है कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफ़ी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफ़ी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा। तकरीबन 97% जो स्पेस है वो आर्मी के इक्विपमेंट से भरी रहती है। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है, सक्षम का हमने अभी एक कार्रवाई की है जिसके लिए ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे वहाँ पे फ्लाइंग इक्विपमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए CICG, कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस के लिए हैं, वो सिस्टम्स भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसे सिस्टम हैं, चूँकि ये सिस्टम आगे बढ़ के तीनों सर्विसेज के सिस्टम्स को अपने साथ मिलाएंगे, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का ये मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी
और किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसका महत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूँ। जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। को एलिमिनेट किया वो पाकिस्तान आर्मी के जो जी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी और जिसको हमने एनालाइज किया बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे ख़त्म हुए। जहाँ तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद इस चीज़ को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफ़ी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की, अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉट एम्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अशनी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेज, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉट एम्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएस एंड काउंटर यूएस एंड लॉट एम्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज़ के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि EW ब्रिगेड जो है उसमें
नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। All right, 117.